Your current energy is not accepting any kind of bullshit from anybody. Any bullshit or any kind of BS that can destroy your inner peace is not being entertained right now. Hello and welcome to this channel. I was thinking of doing this reading for someone for whom I'm channeling a message. And first of all, let me light the candle. And welcome back to my channel. If you are coming to my channel for the first time, my name is NJS and I am a gifted tarot card reader. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक आपके लिए एक मैसेज है जो मैं अभी चैनल करूँगी आपके सामने। स्पिरिट गाइड्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, क्या वो ऐसा कुछ आपको बताना चाहते हैं कि वो चाहते हैं वो आप करो। टाइम क्या होता है, स्पिरिट से अगर हमारे लिए कोई मैसेज आ रहा है, हमको बहुत टाइम हो सकता है कि समझ नहीं आएगा, क्योंकि इतना आसान तो होता नहीं है उसको समझना। काफ़ी टाइम हमको मेडिटेट करना पड़ता है। तो व्हेन यू मेडिटेटिंग, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली be so still that you can channel some messages. But in our day-to-day life, sometimes it gets very tough for us to be quiet and just start listening to um, what our angels have to say or what spirit has to say, right? So I feel that it has been a lot of confusion regarding what is actually going on in your life. Matlab, I feel that there has been a lot of things that's been going on in your life which has forced you to become this really strong person that you become. Whatever challenges you have put across, not just challenges, it's not just challenges. ऐसी लाइफ में काफ़ी सारी हर्ट हुए हो आप, अपनों ने आपको हो सकता है बिट्रे करा हो, या बुरी नज़र का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ईविल आए। एंड कुछ कुछ तरीके से मैं फील कर सकती हूँ कि कुछ एनर्जी वर्क भी हुआ है आप पे, ताकि आपका जो है वो एक तरीके से लाइफ में एक स्टक टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो। एक ऐसे सिचुएशन में आप हो सकता है राइट नाउ यू हैव कम व्हेन यू ऑल्सो हैव फॉरगॉटन दैट व्हाट यू एक्चुअली वांटेड, what was your dream. I feel that you had a very big dream. I would like to give you this channel guided messages to tell you what is your current state and what all you should be doing, that you should be focusing on, okay? And so that your life becomes easy and you are more in sync with your higher self, right? So let's channel the messages. So this is not going to be a pick a card. I will just channel the messages. So let's see what cards come for you. First card that I will take. Oh my god. The first card that has come for you is this Four of Wands. I'll interpret the cards. Let me just take all the cards first. The first card has come as Four of Wands. See. Okay. The second card that has come for you is Nine of Cups. And I'll interpret it. Second card जो है आपका beautiful energy. It's so I wow. What should you focus your energy on? Okay, Hangman reverse. What should you focus your energy on? And okay, what is going well for you? What is going well for you? Nice. The Empress. This is going to be a very nice reading. And what are the words of wisdom that you have from your spirit guides? Words of wisdom from your spirit guides. Page of Cups. Okay, so now we'll start the reading. And first of all, I would like to tell you that the energy that I see, the overall energy that I see is amazing actually. Very nice energy. And feel comfortable right now. I was about to sleep right now, और फिर सोने से पहले मैंने सोचा कि नहीं, वो ऐसा एक फीलिंग आया कि मुझे कुछ है जो आपको बताना है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई जस्ट चैनल द मैसेज एंड आई लेट यू नो कि मैं क्या सेंस कर रही हूँ। और एक मैसेज जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं, पहला है कि आपका जो करंट एनर्जी है वो फोर ऑफ वांड्स का आ रहा है। तो आप जो हो एक तरीके से एक स्थिर प्लेस में पहुंच गए हैं। आप एक बहुत ही स्टेबल पर्सन बन चुके हो। या तो आप
एक बहुत ही स्टेबल लाइफ के टूवर्ड्स मूव कर रहे हो. योर करंट एनर्जी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ बुलशिट फ्रॉम एनीबडी. Any bullshit or any kind of BS that can destroy your inner peace is not being entertained right now. You are not going to be like taking in any kind of things that you feel is not good for you, right? You are very particular about making sure that your mental health and your mental stability, your home, your aura, everything around you is protected, and it is not just protected, it is aligned towards growth. सो आप मेक श्योर कर रहे हो कि आपका जो पूरा एनर्जी है, आपका खुद का एनर्जी, आप देखिए इस कार्ड में देख सकते हो आप, ये देखिए 1 2 3 4. तो जैसे हम जब 4 पिलर्स लगाते हैं तो क्या होता है, पहला उस जगह का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है. तो आप क्या कर रहे हो, अभी अपना फाउंडेशनल कोर वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं, और आप अपने कोर पे फोकस कर रहे हो, आप अपने फाउंडेशन पे फोकस कर रहे हो, आप अपने घर पे फोकस कर रहे हो, आप कहाँ पे अभी फ़िलहाल हो, आपका जो वातावरण है उस स्पेस का वो कैसा है. और ये बस हम पहले अपने शरीर में होते हैं, राइट. तो आपका बॉडी, आपका मन, ये पहला चीज़ है जो हमारा माइंड इन्फ्लुएंस करता है. तो आपका जो मेन फोकस है अभी करंटली, करंट स्टेट जो है, वो आपका इसी प्लेस में आ रहा है कि यू आर आस्क्ड टू बी, जस्ट 1 सेकंड, you're asked to cleanse your space. Okay, you're asked to sage your space. You can go and buy a sage from Amazon, or you can buy a Palo Santo from Amazon. पहले तो आप जहाँ पे हो उस पूरे एरिया को आप अच्छे से क्लीन करें, उसको पूरा डिक्लटर करें. आपका जो घर है, जो फाउंडेशनल स्पेस है, उसको आप एकदम प्योर स्पेस बनाएं. तो बहुत टाइम डिक्लटर करना भी हेल्पफुल रहता है, और आपका सजाए उस जगह को. उसमें आप कुछ नया प्लांट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे आज मैं एक नया प्लांट लाई, एक्चुअली माई मदर गिफ्टेड मी दिस, सो इट जस्ट ब्रॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. ऐसे बैम्बू प्लांट्स जो है आप उसको ऐड कर सकते हो, या कुछ नया प्लांट ला के रख सकते हो जो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करे, राइट. आपका जो करंट स्टेट है वो एक आपका फाउंडेशन पे फोकस्ड है. आपकी शादी अगर हुई है तो आप अपना मैरिड लाइफ चाहते हो कि एक स्टेबल स्पेस हो, राइट. उसके लिए आपके साइड से जो आप करना है, आप उस पे फोकस करें, राइट. अगर ट्विन फ्लेम जो है आपके, वो उन पे भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, आपके ट्विन फ्लेम पे. तो बोला जा रहा है कि देखिए, आपके ट्विन फ्लेम और आपका जो रिलेशनशिप, अगर कोई रिलेशनशिप में है, तो वो इट्स नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप. वेन एवर यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ ट्विन फ्लेम, इट इज़ नेवर जस्ट अ रिलेशनशिप वेर इट्स ऑल अबाउट डेटिंग एंड रोमांस एंड हैविंग फन. इट्स अ वेरी टफ relationship. Twin flame relationship are like the toughest relationships, because it develops character, it develops who you are, and it makes you a much better version of yourself. So I can see that you had a very sort of a bad kind of thing going on with your twin flame, maybe a fight or something that he said, or how he or she behaved, that has affected you, right. It has affected your mental health, it has affected your happiness. Some things that they have said has actually hurt you, and that is something that is coming with this thing. ये आपको इस वजह से, ये आपका करंट एनर्जी है. आप इसके बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि ऐसा है, मतलब उन्होंने ऐसे क्यों बोला आपको, या आपको उस चीज़ से मतलब बेसिकली आपको हर्ट हुआ है. तो ये आप चाहते हो एक सॉलिड फाउंडेशन बने जहाँ पे एक दूसरे का रिस्पेक्ट बहुत ही स्ट्रांगली रहे, और आप रेसिप्रोकेट करो विद रिस्पेक्ट, राइट. सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन आपके साथ हुआ है, ये भी डिस्टाइंड था, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स यू टू बिकम this stronger version of yourself. Now you have become this version of yourself that is so strong, right. आपको अपना हैप्पीनेस खुद ढूंढना आया है. यू आर एबल टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, एंड दिस इज़ वाई योर ट्विन फ्लेम के साथ यू हैड अ फाइट. इवन राइट नाउ, इवन तो देर आर पीपल अराउंड यू, राइट, देर आर पीपल, सो मेनी पीपल आर देयर इन द, आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो आपका एनर्जी डिमांड कर सकते हैं, पर आप किसी को अपना एनर्जी नहीं दे रहे हैं. आप मेक श्योर कर रहे हो कि आपका जो एनर्जी है वो गोल ओरिएंटेड हो, सक्सेस ओरिएंटेड हो, फाउंडेशन ओरिएंटेड हो, और आपका मेन कोर वैल्यू अभी फाउंडेशन बिल्ड करने में है. आप कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन या डाइवर्जन कहीं से भी नहीं चाह रहे हो. आप फोकस्ड हो एक
स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्पेस बिल्ड करने के लिए। हो सकता है आप एक स्टेबल फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हो, उसके लिए आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, या आपका खुद का हेल्थ के लिए आप अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने घर पे ध्यान दे रहे हो। मतलब बेसिकली एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए फ़ोकस जहाँ पे होना चाहिए, आपका फ़ोकस वही है और वो एकदम सही है। और अगर आपका फ़ोकस कहीं दूसरे लोगों पे थोड़ा-सा भी हो रहा है, तो उस पे फ़ोकस आप बिल्कुल ना करें, बिकॉज़ आपके लिए ये स्टेबिलिटी है, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, अ जॉयस हैप्पी फैमिली लाइफ, अ जॉयस हैप्पी लाइफ। नाउ ऐसे सिचुएशन में इट कैन indicate marriage, a happy marriage, it can indicate a happy relationship. So it's very very crucial that in such situations you should know that you are the chosen one, you are extremely lucky. Use affirmations uh, that brings you in alignment with who you exactly are. If you feel that sometimes your energy is being strained, then understand that life में ये जो position है इसको maintain करने के लिए you're never going to be having the same type of environment or the same type of mood, or सेम चीज़ें नहीं होंगी, थिंग्स विल बी चेंजिंग राइट अराउंड यू, बट यू हैव टू कीप योर स्टेबल स्पेस नो मैटर what the situation is. You should know how to keep your stable mind space, where your energy is protected, your purity is protected, your peace of mind is protected, the celebration in your mind is protected. So you have to guard up that happiness, that abundance that you have, right? So make sure that you cleanse yourself, you cleanse your body, and you cleanse your family and your home to protect this energy. And this is coming with the Nine of Cups. So this has been affecting your mood lately. Lately, you have a inner desire. Lately you've been having an inner desire to make sure that you're happy, you want to do things that actually matters. You are somebody who is so full of love and so full of emotions, and you like to give so much love and happiness and joy, that it's really really crucial that all your cups are full. If you do not have adequate supply of happiness in your own life, how are you going to give it to others, right? So it's very important that you focus on your happiness, and in order to do that, what you'll have to do is you'll have to make sure that you sit down in the start of the day for 4 to 5 minutes of meditation minimum. Every day you sit down and make sure that your mind goes in that space where you are just simply meditating. Okay, and that meditation eventually in like 90 days will completely transform your mind. Now meditation does not hit somebody immediately, right? You have to do it for a prolonged period of time for having an um, substance substantial impact in your mind. So if you want to see how meditation changes your system, you'll have to do it for at least 90 days. So you have to be consistent on that, and every single day just sit down in the morning. You can focus on some things that you're grateful for. First things in the morning, like maybe 3 things or maybe 9 things that you're grateful for. Or you can also play some guided meditation and just stay quiet, or you can do some chanting. There are multiple things that you can do. Different days you can try different things, but make sure that the first few minutes of the morning are peaceful, and make sure that it's for yourself, right? And then after that, do 9 different activities throughout the day that gives you joy. So move your body in different ways, like probably you can go for a run, and that's like the simplest thing you can do, running, walking. If you don't feel like doing it sometimes, it's okay, don't push yourself. But make sure that you eat the right kind of food. Maybe at least if you are having a lot of junk food, then don't try to jump it all together to extremely like on a healthy diet, which you might not be able to do. So make sure that little addition in your diet plan can make some difference, right? Start including vegetables and fruits and things that will actually be good for your health, right? So make sure that you move your body, do yoga, and do pranayam, do meditate, and sit in nature, quiet. Because see, whenever you do meditation and yoga, and whenever you're doing sadhana, you are actually going to be connected to the environment around you or nature. So make sure that you give yourself adequate time to enjoy nature, or even like enjoy your morning cup of coffee, and make sure that you have like 12 glasses of water. And if you're not having 12 glasses, at least have like
9 to 10 glasses of water, and try to have some beverages or drinks that makes you happy, for example like black coffee, green tea, or some kind of smoothie or some things. Just nourish your system. If you do not nourish yourself, then it will be very tough for someone to feel happy on the outside, because happiness is a completely self created thing, right? I mean, you never get happiness from outside, it's always from the inside. Now, if two individuals who are not happy are in a relationship, then if your cup is not full, how are you going to give love to your partner? It's not going to be possible. So what you'll have to do is firstly make yourself feel happy, and for that happiness you cannot depend on your partner or your spouse that they are going to bring you the happiness, because then you're going to become needy, you're not going to be really happy. I mean, if you're in a relationship and both the individuals go to the other one and ask for happiness, then the partner just goes to the other one, is like, give me happiness, and this partner is waiting for the other one to give them happiness. So both the partners actually stay sad, and it becomes a very toxic situation, because none of them are happy, and they're starving for happiness. So in fact, instead of doing that, what you do is you fill your own cup of happiness. You make sure that you're happy within yourself, and there is simple lifestyle modification, simple things that you can do for yourself, right? You can be in partnership, but primarily as an individual you have to do it for yourself. Okay, so it's really important that you do take out some time in throughout the day for journaling. Extremely helpful when it comes to happiness. Just write down your thoughts or what you're grateful for, and also maybe dance, because dancing is extremely beneficial to make you happy. If you have not been dancing for a long time, then like me, I used to be a dancer and I have not danced for a very long time. What you do is just you try to just move your body a little bit, and then just start to get in the groove, so that you start feeling happy, and eventually you will start moving your body and you will start feeling happy. Okay, and the kind of music you listen to has a huge impact too. So make sure that your mind space is covered, this space is protected with the positive vibes and good energy, which will not be possible for you to get from someone else's life, right? You cannot scroll on social media and find that in someone else's life. But sometimes you can take inspirations. Maybe there are a lot of vlogs and all on YouTube that you can find, where you can find some inspirational content, wherein you know how to generate happiness. You can see someone and feel good. But do make sure that you don't go into the envious space, because the head space needs to be protected, because everything is in this space, right? So make sure that you're happy, and adequate amount of emotional stability is crucial for having every other thing like material stability and thought clarity. So emotional stability is something that you have to learn how to provide it to yourself. If some person or situation has been straining you, what you do is you do cord cutting. Okay, and when you do cord cutting, you just I'll if you want to know about cord cutting, there are a lot of videos you can find on YouTube on how to do that, and that will be simple for you to just cut all the cords from places people thinks that is draining your energy. Okay, so you want energy should be protected, and it should be nourished, right? So you nourish yourself, but make sure that there is no leakage in the system, that it's just getting drained out. So that should not happen. Okay, so that is one thing. And what you should be focusing on, so on the hangman reversed, so some people have been giving you an evil eye probably, and you have been under some kind of spiritual attacks also lately. But they wanted you to feel stuck. Okay, they wanted you to not be able to think clearly, unable to process and think, and make sure do what is right for you. So it has come as the reverse. So now you are being asked to stand upright and just see things as it is. Okay, where you are, accept that, and start making decisions. Stop being in a place of um, unable to, where in a place where you're not able to understand what to do. Just understand that it starts with small things. Little things add up, and in those little things, how genuinely honest you are to yourself is crucial, and you can take full responsibility for for
for all the things in your life. I mean, the blame game that this person did not do this and that person did not do that, it is just stupid, right? So if you had some problems probably with your parents or your spouse, then understand that yeah, it's okay, like you had those things, but you're good enough to fix it, right? I mean, I'm not saying that you have to deny that kind of situation did not occur. हो सकता है कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छा ना रहा हो, नॉट द बेस्ट टर्म्स। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन बहुत अच्छा ना रहा हो, या जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आपका क्रश है और वट एवर, उनके साथ सिचुएशन कैसा है, वो सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाता है क्योंकि आप किसी दूसरे इंसान की बात कर रहे हो, राइट? प्राइमरीली आपका रिलेशन आपके साथ कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप खुद जो है क्या अपने माइंड स्पेस में हैप्पी हो, और क्या आप डेली अपने लेग्स को मूव करके कहीं कहीं जा रहे हो। आई यू गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर टू बाय ग्रोसरीज फॉर योर सेल्फ? इफ़ यू नॉट गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर, देन आर यू गोइंग टू द किचन टू मेक श्योर दैट यू ईटिंग द राइट थिंग्स? Are you making sure that you walk to the bathroom and take good care of your body, take good shower and all? Are you making sure that you walk downstairs to um, maybe go to a park or something, just enjoy nature? Are you making sure that your hair is clean, your clothes are clean, your surrounding is clean? Because you are completely in charge of those things, right? So just little things you fix in your life, and उससे आपका मतलब बहुत ज़्यादा मन में अफेक्ट करता है। जब आप खुद एक्सरसाइज करते हो, खुद पे फोकस करते हो, देन डेफिनेटली यू कम इन योर एम्प्रेस एनर्जी। सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू। तो आपके लिए गोइंग वेल हो रहा है वो ये है कि आप एक एम्प्रेस की तरह ग्रो कर रहे हैं। इफ़ यू आर अ वुमन, देन यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फर्टाइल राइट नाउ, एंड देयर कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर इट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट if you're not planning for it, then you should be protected well, and if you are planning for it, then there is a lot of scope for pregnancy, because this is a card for fertility, and you are going to be glowing and growing like a empress, and there's a lot of growth and lot of fruits that your work will also bear, like not just your body but also if you are अगर अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपने कुछ काम स्टार्ट करा है तो उसमें ग्रोथ होगा, बहुत सारा फ्लो ऑफ अबंडेंस ये सब आपके लिए आ रहा है, एंड ये चीज़ आपके लिए इट इज़ गोइंग वेल, लाइक दैट इज़ वॉट गॉड हैज़ प्लान फॉर यू, राइट? तो यू आर अ वेरी लव्ड वन ऑफ गॉड, यू वन ऑफ द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो दैट इज़ अमेजिंग। बट इफ़ यूर अ मैन यू वॉचिंग इट, देन दिस इज़ एनर्जी, राइट? तो इस एनर्जी में दिखाई ये दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ आ रहा है, एंड इफ़ यू मैरिड देन यू कैन एक्सपेक्ट a pregnancy with and there can be a new addition to the family। और अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ कमिंग, दिस इज़ द फर्टिलिटी ग्रोथ एंड लॉट ऑफ ग्रोथ कमिंग फॉर यू। बट देखिए इस चीज़ के लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि आप हैंगमैन के सिचुएशन में ना रहें। यू कैनॉट स्टे इन दिस मोड, दिस इज़ वॉट यू शुड फोकस ऑन, कि अपने पैर पे खुद खड़े होके आपको ये सब चीज़ें जो भी आपका हैप्पीनेस का रिलेटेड है, जो भी काम आपके हैप्पीनेस रिलेटेड है, वो उसका आप खुद यू टेक charge of it, you take charge of your own happiness, you go out yourself, right? Make sure you get the right nutrition, make sure you get the right emotional nourishment, nourish yourself emotionally, nourish yourself spiritually, nourish yourself physically, nourish yourself socially. What is the social thing that you want? See where you are, where you want to go, so just take the small steps immediately. Nourish your vision board, what is that you wanted to achieve, वो उसमें उसके लिए आपको क्या steps लेने हैं, do them। नरिश योर बिजनेस, उसके लिए आपको क्या क्या न्यू प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करना है या समथिंग। इफ़ यू इन योर जॉब लाइफ, देन नरिश इट इन अ वे दैट यू फील हैप्पी, राइट? एवरी थिंग शुड बी गाइडेड टूवर्ड्स योर ओन हैप्पीनेस। मेक श्योर दैट every single thing that you do in the day, you take charge of your happiness, right? You don't like just wait for someone else to come from outside and give you that happiness, right? And you take charge of your marriage, right? So make sure that you understand that if you are in a marriage kind of a situation, then it doesn't stay the same all the time, and things are bound to change, because if you have made a commitment to stay with someone for a long term, then you need to understand that there are going to be different kind of seasons that you will see, and you cannot expect to run away from any of it. So just be patient and be kind, and be transparent, and do not make yourself a doormat no matter what. But at the same time, you gotta be honest to yourself, and the
foundation that you build is firstly within yourself. Okay, and what universe wants to tell you is words of wisdom from your spirit guides is get in the पेज ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आपको अपना जो यंग एनर्जी जो है, जब 18 से 25 साल के जब आप थे उस टाइम में, जब आप बस नया नया लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो आपका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया था, आप फर्स्ट टाइम चीज़ों को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, कहीं न्यू प्लेस में जा रहे हो, जो आपका एक्सपीरियंस हुआ करता था, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। तो कनेक्ट विद दैट एनर्जी ऑफ 18 to 25-year-old self. Maybe you go to those places, do those things that you used to like. Obviously now, if you are say 24, then you are not going to be acting like you're 19, right? And I can see the age of 30, 24, 33, 23, 28, 25, lot of 25s. So make sure that you keep that youthful energy in yourself. तो उसके लिए आपको फन, हैप्पीनेस उसके साथ ही कनेक्ट करना होगा, बिकॉज द मोर यू आर एट अ हायर एनर्जी वाइब्रेशनली, मोर यू विल बी अलाइन टूवर्ड्स योर गोल्स ऑल्सो, एंड आपके लिए ईजी होगा चीज़ों को अकम्प्लिश करना, एंड प्रोडक्टिविटी वाइज ऑल्सो हाई प्रोडक्टिविटी में रहना। तो इसलिए मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज, राइट, एंड wear the kind of clothes that makes you feel um, comfortable and young. Try different kind of fabrics. अलग अलग चीज़ों को ट्राई करें, और जो आपने अभी तक अचीव करा है उस पे भी आप फोकस करें। तो बचपन से आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें अचीव किया है, तो अपने अचीवमेंट्स को भी देखें, तो उससे आपको एक आइडिया और एक माइंड में भी अच्छा सा फीलिंग आता है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड एंड आई कैन अचीव मोर। तो खुद के साथ का आपका जो लैंग्वेज है उसको कनेक्ट करें, अपने इनर चाइल्ड को हील करें। आपके इनर चाइल्ड को जो अटेंशन चाहिए था वो आप खुद उसको दें। आपके इनर चाइल्ड को जो नरिशमेंट चाहिए था वो आप खुद दें। वो कैसे देंगे? अफर्मेशन दैट यू आर इनफ, that you've done a good job, just daily, like make sure that you do that and have a very happy positive relationship with yourself, and it's crucial that you have that. And एक और चीज़ जो आपको, अगर कर्मा वाइज आप देखो तो दान करें, जितना आप हो सके लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें। दान डजंट मीन दैट you have to do like big dan and all, but whatever is in your capacity, just try to help the needy, of someone who needs something, give them that, and you feel good about, um, yeah, it will make you feel good. So that is there, that is one thing. And also make sure that you stand your ground. You have to stand your ground. In today's time, things are not going to be that easy for you, so try to avoid a conflict. Do not get into a conflict situation, but make sure that you do stand your ground. If you don't stand your ground, and if you can't stand up for what you believe in, see, if you are a person, अगर आप साधना करते हो तो आप नेचुरली नेचर को प्रोटेक्ट करना भी चाहोगे और नेचर के साथ कनेक्ट भी होंगे, तो आपको अपने ग्राउंड के लिए स्टैंड करना होगा फियरलेसली। उसमें आप बैक ऑफ नहीं कर सकते हो। अगर आप बैक ऑफ करेंगे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत होती जाएंगी, क्योंकि आपने कभी स्टैंड नहीं लिया। तो वर्क, आपका जो हार्ड वर्क कर रहे हो आप, उस पर बहुत सारा आपको फाइनेंशियल वो होगा। और पहले एक आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ था, जिस हार्ट ब्रेक की वजह से आपको बहुत सारा मेंटली आप काफ़ी हारे हुए महसूस किया आपने, अब सब कुछ छोड़ के जाने का हुआ, जिस वजह से आप काफ़ी टाइम स्टक फील करते हो, उस एनर्जी से आपको बाहर आना होगा। और उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी है जो आपको इस चीज़ से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, एंड दैट इज़ knowing that we have all come to earth to experience certain things, and taking it in a positive way will help us to sail through. And when we go through all of these things, it just develops our character so strongly that we become as powerful as a lion in this one, you can see. तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए आपको गो थ्रू करना पड़ता है सिचुएशन से। अगर आप सिचुएशन से गो थ्रू नहीं करेंगे तो योर कैरेक्टर विल नॉट बी डेवलप्ड सो स्ट्रांगली। तो आपका स्ट्रॉन्ग वर्जन बनाने के लिए यूनिवर्स आपको मेक श्योर दैट यू go through this, and stop getting worried about this money energy if you are worried about the finances, because I am seeing that lots of abundance is being poured on you, and you're going to be having a lot of success and financial abundance from multiple income streams. Okay, so you are a chosen one, and God really loves you.
विच इज़ वाई यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यू ऑलवेज बीन प्रोटेक्टेड। आप देखो इन द पास्ट ऑल्सो आप कभी कहीं पे फंसे नहीं हो, आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया गया है। कोई भी आपके साथ है या नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो एक बार बस अपना पास्ट देख लीजिए और आपको हमेशा दिखेगा कि गॉड आपके साथ थे। Okay, with this sweet thought, I want to end my reading and this video. If you like my content, then it would be very nice of you to subscribe to my channel and stay connected with us. And also do check out Love and Joy Manifest, wherein you can get productivity planners and you can get crystals for different aspects of your life, for gaining confidence, for becoming a stronger version. You know, being able to face things and mental clarity, these are all charged। बहुत ही मेडिटेशन के बाद उनको चार्ज करके these crystals are placed, they are totally real and very authentic। तो उसको भी आप देख सकते हैं। ऑल्सो लाइक स्पिरिचुअल मेडिटेशन के लिए प्रोडक्ट्स लाइक कैंडल्स एंड these candles are of very premium quality। I dropped it on my hand and they have very amazing fragrance, the fragrance is amazing, so when you meditate with something like this it actually makes you feel very calm। And there are a lot of other things that you can check out, and if you want to book a private reading, because this was a general reading, it might have resonated with you, it might not have, if you want to book a private reading then please contact and you can book one। Bye, lots of love।